Good morning, students. Students, do you know what the special day today? I hope you know very well about it. Today is Mother's Day. I want that you must wish your mother because of her efforts you have come into this world. Really, mother's role is very important in one's life. First of all, you have to say to Happy Mother's Day to your mother. Now, I'm going to tell you about the summary of the second chapter. That will be really very helpful to you, especially in objective as well as subjective questions. Please listen carefully. You have to mark the important lines in textbook also, and you have to also observe that I am going to teach you now. First, I told you the chapter We Are Not Afraid to Die, If We Can All Be Together, has been written by Jordan Cook and Ellen East. The narrator of this chapter is Jordan Cook. He was 37 years old businessman. He is the narrator as well as captain of the ship. And this chapter has been divided into three sections. I am going to describe the first section, Dream Ends Up in Disaster. A dream voyage. It was the dream of the author that he wants to take the round of the whole world. A long-standing dreams of the author. What was his dream? To duplicate the round world voyage that was earlier made by Captain James Cook 200 years ago. And his covering was 1,05,000 kilometers. The author wanted the same. The author and his wife Mary both spent at least 16 years. Whenever they got their leisure time, they wanted to, especially make themselves expert in their seafaring skills in British waters, so that in future whenever they started their journey, they would not face any problem. I earlier told you it is a travelogue because the narrator has shared his own experience. Now, for that reason, the boat was selected. The name of the vessel was VESSEL. You can also say Wave Walker. It was professionally built, 23 meter long, and 30-ton wood was used to make it furnishly beautiful. It was fitted and tested in the roughest of waters for months. When they both realized that they were expert in this region, then they started their journey. They set sail in July 1976. We can call it sea voyage, sea journey. So you must mark the date. They set sail in July 1976 along with his wife Mary, son Jonathan who was 6 years old, and daughter Suzanne she was 7 years old, and they started their journey from Plymouth, England. Okay, now first leg of journey, first stage of journey. As the voyagers sailed down the west coast of Africa to Cape Town, they did not face any problem during that time. Now they hired two crewmen from there. One was Larry Whistle, who was an American, and another was Hart Segler, who belonged to Switzerland, and he was a Swiss. And they set all these crewmen were there, or the family members, set sail for the southern Indian Ocean. It was also called the world's roughest seas. Now, first signs of impending disaster. Now, they they encountered strong wind on the second day out of Cape Town. They hired the two men
from Cape Town when they started their journey, and on the second day out of Cape Town, they had to face strong wind. The weather was not favorable and which continued for the next few weeks. The size of the wave was 15 meters high. It was as same as the main mast. Cause of worry. The alarming size of the waves were the cause of the author's worry. Because its size was 15 meters, it was as high as the main mast. Now, reached 3500 km east of Cape Town on December 25. December 25, you know very well that Christmas Day is there. Even in the dire situation, they celebrated the Christmas occasion and they lighted Christmas tree because they knew very well that there is hope even in dire situation. They celebrated Christmas, kept the spirits high despite deterioration in weather condition. And they thought the change would come, but no change came till 1st January. And they thought on 1st January the change would come. This change would certainly come, but change would come. It was not good form. The situation became bad to worse. On January 2nd, preparing for the worst, the wave size became huge. It was as double as earlier was there. It was 15 meters earlier, now it was 30 meters. Voyagers saw endless enormous sea rolling towards them. ऐसे लग रहा था sea उनकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा था with each wave. And the screaming of the wind. Wind was blowing very fast. And the spray, the water was also coming along with the wind, and the spray was very painful to the ears. And what steps were taken by the captain? The boat speed was slowed down, and they also dropped the storm jib. Being a good captain, he has worked in such a way, and they tied heavy mooring rope. Lash means tied, mooring rope, you know very well that here. In a loop across the stern. सब चीज़ों को बांध दिया गया और stern कहते हैं आपका back side of the ship. They double lash everything. हर चीज़ को double tie कर दिया गया और went through. They practice a lot in life trap drill. Life lines को attach कर दिया गया and they wore oilskins as well as the life jackets. I already told you the meaning of these hard words. You must write these hard words in your book. Disaster and its aftermath. Aftermath is called the result after the disaster. At about 6 p.m., 2nd January is going on. What happened in the evening? The wind dropped. Sky became absolutely dark, followed by a growing roar. It means that something is going to happen wrong because ominous silence was earlier. Suddenly what happened? Tremendous explosion that really shook the deck. A powerful flow of green and white water broke over the ship. अब यहाँ क्या हुआ? बड़ा तेजी से अटैक हुआ और ग्रीन और वाइट जो वाटर का जो स्ट्रीम था इंस्टेंटली वो कहाँ नज़र आया? शिप में नज़र आया. उसने एक बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ डेक पर, जिसे मैंने रूफ भी कहा है और मैंने जिसे कंपार्टमेंट भी कहा है फ्लोरिंग फॉर्म में. कैप्टन गॉट इंजर्ड. फिजिकल इम्पैक्ट आप देखिएगा. कैप्टन इंजर्ड हो गया, उसका हेड स्मैश हुआ. किसके साथ? व्हील से टकराया. फ्लू ओवरबोर्ड. ही वाज ऑन आउट ऑफ द शिप एंड ही फाउंड दैट ही वाज सिंकिंग बिलो द वेव्स. उसे लगा वो वेव्स के नीचे जा रहा. Nobody was there who can tackle the wheel. Now he thought that he was losing consciousness, but he prepared himself for the situation and approaching that. But you know very well that your luck really matters. और यहाँ पर कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ कुछ समय बाद. Providential escape for the author. Suddenly his head come out from the water. And he observed that wave walker was capsizing. उसे लगा wave walker जैसे डूब रही हो, क्योंकि her mast became almost horizontal. वो horizontal हो चुकी थी.
तभी यहाँ फिर एक लक का एक इंडिकेशन नजर आया. A wave came. It threw the ship upright. Now, using his presence of mind, Captain instantly caught the guardrails, जो सेफ्टी रेल्स उनको पकड़ा, and sailed through the air into Wavewalker's main pool. He was badly injured. और क्या हुआ उसके साथ? उसके लेफ्ट रिब्स क्रैक हो गई, उसके टीथ ब्रोकन हो गए और माउथ वॉज completely filled with blood. Even in this dire stage, he did not lose his hope. The captain kept his courage, found the wheel, and he lined up the stern for the next wave, and he was still hung on the boat. He did not leave the boat. Decks got smashed. Decks बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और उसने पाया, he found that the ship was full of water, and he was waiting that someone would come who can tackle the wheel, because he wanted to inspect the situation. Again, one positive thing also happened. Mary came out, and here he instructed Mary that she must tackle the wheel. Mary told that they were full of water, and when the charge was given to Mary to tackle the wheel, crew members showed unparalleled strength, teamwork. Crewmen Larry and Hop, they started pumping out of water. अब सब यहाँ पर टीम वर्क चल रहा था. Captain half swam, half crawled. He reached to the children's cabin, and he wanted to inquire how the situation of there was. At the time, they were on the upper bunk. Now here he had no time to worry about the bump head of his daughter. She told that here his head was swollen. Even then, he had no enough time. She told that here her head was swollen, but he had no enough time to look the situation of Shiv, because he had to do something for the members, for the voyagers. And he struggled back on deck, having found hammers, screws and canvas, because he had to do something so that water would not come inside, and he wanted to throw the water outside. Through that reason, he took a canvas, hammers and screws. So that the water would not come inside, he stretched the canvas and hatch covers through the gaping holes, and in such a way the water was deflected to the other side. Settled to make necessary repairs to save the ship for sinking, managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. The result was that here the water was deflected over the side. She was really very brave girl. Even she knew very well that she was injured, but she did not want to disturb her father here. More problems arose. Whenever the situation becomes negative, again more negative problems come. It becomes our own efforts. If we have positive approach, so obviously we will search a way even in the dire situation. But more problems arose here. What? हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक विद द डेब्रिस. कि जो हैंड पंप है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था कि वहाँ जो चीज़ें फ्लोट कर रही थी उसकी वजह से. आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक पंप के साथ क्या हुआ? दे गॉट शॉर्ट सर्किटेड. वो शॉर्ट सर्किट हो गए, वो वाटर का लेवल अलार्मिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा था. 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. इसके अलावा क्या हुआ था, जो हैंड पंप्स थे वो भी थोड़ा डैमेज हो गए थे इन द शिप में. और कैप्टन यूज्ड अनदर इलेक्ट्रिक पंप्स. किसने देखा, जो दूसरे चार्ट रूम फ्लोर में जहाँ पर मैप रखे होते हैं वहाँ पर उसने सर्च करा. ही सर्च टू इलेक्ट्रिक हैंड पंप्स और एट लास्ट दे वर्कड. कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्क हुआ यहाँ पर और उसको किससे कनेक्ट कर दिया गया? आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया गया. द ऑथर वॉज नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई ऑफ मेडो कॉल्स. Mayday calls means emergency calls, because they were trying to get contact there, but they were not getting replies because they were in the remote corner of the world. Daughter she was badly injured. Her head was swollen, eyes enormous, black and deep cut on arm. Even then, she did not inform her father about deep cut on arm because she didn't want to disturb her father. In such a way, she showed exemplary courage by not burying the captain, who made desperate
attempts for safety. Okay, now second section begins battle of survival. पहले तो जो उनके ड्रीम थे आपने देखा फर्स्ट सेक्शन में ऐसे लग रहा था जैसे उनके सपने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हो। अब यहाँ पर इंस्टिंक्ट लड़ाई चल रही है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। बैटल ऑफ सर्वाइवल। 3rd January, conditions under control but critical. Tremendous leak somewhere below the water line. कहीं ना कहीं लीक हो रहा था, पानी अंदर आ रहा था। बोट्स की जो मेन वुडन फ्रेम्स थी वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुकी थी। जो स्टारबोर्ड साइड थी, राइट साइड ऑफ द शिप थी, वेव वॉकर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सके। अब ऑथर को डर था कि कुछ स्टेप ले लिया जाना चाहिए क्योंकि इट हैड नो इनफ स्पेस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब नाउ द ऑथर ओनली होप टू रीच एम्स्टर्डम, टू रीच आइदर द 2 स्मॉल आइलैंड्स जो कहाँ थे, फ्यू 100 किलोमीटर्स की दूरी पर थे, जिसमें से एक का नाम क्या था, आइल एम्स्टर्डम। इट वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। इट वॉज एज बिग एज अ बैटल शिप, जिसको बाद में कंपेयर भी इन्होंने करा है। कुड बी पॉसिबल ओनली इफ द विंड स्लो डाउन। ये पॉसिबल तब था जब विंड की स्पीड कम हो जाए। ऑलइंग फ्रॉम तभी वो सेल को होस्ट कर सकते थे, फहरा सकते थे। Crucial days, January 4th and 5th. Very important question it is that year. After 36 hours, क्योंकि 2 जनवरी को शाम को 6 बजे वेव ने हिट करा था और 36 आवर्स से कंटिन्यूस पंपिंग कर रहे थे और यहाँ पर अभी कुछ पानी ही बचा हुआ था। क्रू हैड टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कम। अभी इतना एफर्ट्स करने के बावजूद भी पानी अंदर आ रहा था। इतना नहीं था कि ही कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मास, इतनी कैपेसिटी नहीं थी। Hoisted the storm jib and headed in the direction of the 2 islands. अब यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होने मिला। They took their first meal in almost 2 days. 2 दिन में उन्होंने पहली बार अपना खाना खाया था, क्रैकर बिस्किट्स का और कॉर्न बीफ। बीफ इज अ फ्लैश ऑफ का। पर उनकी जो रेस्पाइट था वो शॉर्ट लिव्ड था क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स अगेन बिल्ड अप एट 4 PM। 4 बजे फिर क्या हुआ, ब्लैक क्लाउड्स घिराए। विंड बैक, विंड की स्पीड 40 नोट्स की फॉर्म में चले, सी माइल्स मैंने कहा है। और जब विंड बहुत तेजी चलती है तो ऑब्वियसली वेव्स का इम्पैक्ट सीधा डायरेक्टली नजर आता है। दैट वाज गेटिंग हायर। अब नाउ व्हाट हैपन ऑन जनवरी 5 जनवरी की बिगिनिंग मॉर्निंग को क्या, यू मस्ट मार्क, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क करा हुआ है ये डेज, इंपॉर्टेंट डेज है। सिचुएशन बिकेम अगेन डेस्परेट। अब ऑथर लॉस्ट होप, उन्हें कोई होप नजर नहीं आ रही थी। एंड मैरी एंड ही वॉज वेटिंग फॉर अप्रोचिंग डेथ। कैप्टन व्हेन द ऑथर रीच्ड टू चिल्ड्रंस केबिन, देन हिज कैप्टन सन जोनाथन, उसने पूछा अपने जॉन ने पूछा फादर से वेदर एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पर फादर डिड नॉट नो हाउ टू रिप्लाई। तो कैप्टन के जो बेटे हैं जोनाथन, एक बहुत अच्छी लाइन कही जिसने ऑथर का मोरल बूस्टअप कर दिया। उसने जो लाइन कही, दिस इज द मेन टाइटल ऑफ द चैप्टर। उसने कहा फादर नो नीड टू वरी व्हेन ऑल आर टुगेदर, वी नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। न्यू डिटर्मिनेशन एंड करेज रिवाइव्ड इन द कैप्टन एंड he continued his effort. These words boosted the morale of the author and he continued his efforts to fight. We'll see. हमने यहाँ एग्जाम्पल देखा, कभी कभी छोटे बच्चे भी पेरेंट्स का मोरल बूस्टअप कर देते हैं, एग्जाम्पलरी करेज का एग्जाम्पल देते हैं। डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। उसने एफर्ट्स करा वीकेंड स्टारबोर्ड साइड का, क्योंकि 22 जो बैरल्स थे प्लास्टिक के वो लगाए और क्या है पूरी तरह से उसने वहाँ पर नायलॉन से अटैच कर दिया था। सेफ एट लास्ट। अब यहाँ देखिएगा कि जनवरी 6 वेव वॉकर राइड आउट द स्टॉर्म एंड द विंड इज, कि उस पर चल रही थी, स्टॉर्म वाज गोइंग ऑन इवन देन द वेव वॉकर राइड आउट द स्टॉर्म। विंड की स्पीड थोड़ी कम हुई। कैप्टन ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से एंगुलर डिस्टेंस जज किया जाता है। तो उसने कैप्टन ने जज करा, कैप्टन ने रीड करा कि आखिर आसपास जो है कितना, किस स्पीड पर चला जाए जिससे कि आइल एम्स्टर्डम जल्दी पहुंचा जा सके। और यहाँ पर शिव ने एक कार्ड बनाया।
You made a card even in this critical or catastrophic situation. That card really boosted up the morale of her father. और क्योंकि फादर बहुत वरीड थे, यहाँ थोड़ा सा उसने उसे हंसाने की कोशिश करी उनके कैरिकेचर्स ड्रॉन करने के बाद. एंड द ऑथर वेंट बैक एंड द चार्ट रूम फ्लोर. वक्त उसने किस पे काम करा, विंड की स्पीड पे काम करा, चेंज ऑफ कोर्स एक्शन पे काम करा. ये देखा कि विंड की स्पीड क्या है, जिससे कि कैलकुलेट कर सके कि उसे कितना समय लगेगा आइलैंड एम्स्टर्डम पहुँचने में. साथ साथ ही आल्सो हैड टू जज कितनी स्पीड पर, कितने डिग्री पर शिप को चलाया जाए. नाउ हियर सेक्शन 3 बिगिन कि हाउ दे कम आउट फ्रॉम जॉज ऑफ डेथ. कैसे मौत के मुंह से वो बाहर निकल कर आए. ये जॉज ऑफ डेथ है बेटा. ही चेक्ड एंड रीचेक्ड कैलकुलेशंस डिस्पाइट ऑन हैंडीकैप्स. इतने उनके पास चीज़ें नहीं बची थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी थी. उस हैंडीकैप्स मतलब यहाँ पर जो रेयर चीज़, जितनी भी चीज़ें उनके पास बची थी वो क्योंकि नया कुछ मैनेज कर नहीं सकते थे, जितनी भी चीज़ें बची थी उससे उन्होंने मैनेज करा. यहाँ पर क्योंकि मेन कंपास खो चुकी थी, अब स्पेल जो थी उन्हें दे वर नॉट कन्फर्म वेदर इट वुड गेट एग्जैक्ट डायरेक्शन और नॉट. एंड डिपेंडिंग ऑन हिज कैलकुलेशन ही आस्क्ड लैरी. उसने लैरी को कहा कि वो कितने डिग्री पर चलाए. 185 डिग्री पर इंस्ट्रक्शन दी गई लगभग 2 बजे. उन्होंने कहा हम इस 185 डिग्री पर चलेंगे तो हम आइलैंड पर लगभग कितने बजे पहुंच जाएंगे, 5 PM तक. और ऐसा अंदाज़ा था. और यू नो वेरी वेल दैट ईयर ऑथर से डिसीजन वाज राइट. और ऑथर को कब कब में नींद आ गई, ही डिड नॉट कम टू नो. व्हेन ही वोक अप द टाइम वाज 6 PM. ही थॉट दैट ही हैड मिस्ड दैट आइलैंड, बट हिज सन जोनाथन and daughter appeared and they told that he was the best father in the world because at last they had reached that island. And they told he was the best father as well as the best captain. Because of that reason they had found the island. The voyagers touched shore at Isle Amsterdam. आखिर वो आइलैंड एम्स्टर्डम पहुँच गए सेफली. इस प्लेस को बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड कहाँ है, क्योंकि दिस आइलैंड सेव द लाइव्स ऑफ दीज पर्सन्स. 28 inhabitants welcomed that warmly. Courage, convictions, a keen presence of mind, and above all the strength of the family brought them successfully, and they had come out from the ordeal and they had come out from the jaws of death. And he thanked Larry and Hop. He thanked Mary because she had tackled in the crucial hours the wheel. And he also thanked his children, Shu and Jonathan, who gave the rare example of courage in this direst situation. In this way, there was a happy ending of the